Over burqa-clad women ahead of phase 6 voting, BJP wants proper verification of burqa-clad women voters. A BJP delegation met the poll body officials and submitted a memorandum demanding proper verification of women voters wearing a burqa. They want burqa-clad women to go through thorough investigation. AIMIM chief trained guns on the BJP, accusing the party of harassing Muslim women voters, asserting that women are being targeted by the Saffron Party. It was on the 13th of May when BJP's Madhavi Lata checked voter IDs of burqa-clad women in Hyderabad. She claimed she received information that the officer at the booth caught a minor girl casting her vote. दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन लेकर आए जिसमें हमने ज्ञापन दिया है चुनाव आयोग को। हमारी मांग है कि जो भी बुर्का नशीन हो या किसी ने मास्क लगाया है या किसी ने तौलिया लपेटा है, फेस शुड क्लियर आउट, वो साफ होना चाहिए। उससे आइडेंटिटी वोटर की साफ होनी चाहिए, जिससे फेक वोटिंग ना डले। हमको चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी इसका समाधान होगा वो करेंगे। कि जब हम पवित्र यात्रा हज की करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, तो वहां भी आपके चेहरे का मिलान वहां के जांच अधिकारी बहुत ही सघन जांच करने के बाद करते हैं और हमें वहां कोई दिक्कत नहीं होती। वहां हम अपनी जांच कराते हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग में ये कड़े निर्देश हैं कि पहचान दिखाना होगा, उसके बाद ही मतदान हम सबको करना है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाके नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। और मोदी जी बात करते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। अरे मुसलमानों को बेइज्जत किए बिना आपके पेट में खाना हजम नहीं होता। Bharadwaj is getting asked more details. Amit, in fact, this entire controversy, especially when that video we put up for our viewers of Madhavi Lata asking women to show their identity cards went viral, has raised questions on whether there could be any fraudulent practice or not while voting. It's a genuine concern, but at the same time, it's a sensitive issue, isn't it? True, Sneha, this is absolutely a sensitive issue, and many of the people will relate it to their beliefs and encroachment in their privacy as well, and that's what has been argued by leaders such as Asad Owaisi, especially in regards to what had happened in Hyderabad. And now Delhi BJP unit has formally made a memorandum to the Election Commission saying that there should be proper checking of the burqa-clad women or parda nashi women who reach the polling stations, and this particular concern was also shown by the BJP's certain units, when the elections were happening in Western UP and Braj area as well. And there were reports as to how BJP is preparing this regard to ensure that no fake votes are, given by certain individuals who are burqa-clad. So we'll have to see as to how the Election Commission responds to this particular memorandum as well. All right. I'm going to thank you for the moment, for getting us up to speed with those details. Amit Bharadwaj with that report.